many times it happens कि candidates जो है जो story मतलब लिख देते हैं जो picture से बिल्कुल ही विपरीत होती है. It has no bearing and relevance to this picture that has been shown. So that is one of the major reasons why many candidates get rejected. A healthy work environment, a healthy environment should be given to the child. That's what I tell most of the parents also. कि एक अच्छा माहौल देना बहुत जरूरी है बच्चे को कि that is a formidable age when the child develops his personality. There are not all OLQs that the psychologist will be assessing. Certain OLQs are there, especially when it comes to the physical courage or the physical stamina. They are best, judged or assessed by the GTO. An officer is expected to communicate in English because tomorrow it will happen that the officer will have to not just command his men, बट वो बाहर भी जाएगा और वो फॉरेन नेशंस में भी जाएगा. तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज विच यू आर एक्सपेक्टेड टू नो. जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय. स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो. टुडे वी हैव विद अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर. सर, थैंक यू so much. It's an honor and a privilege to host you on our small channel. And for those who don't know, sir is an alumnus of Indian Military Academy, Dehradun, and sir has served 20 years, more than 20 years across all terrains जो भी इंडिया में possible हैं. And sir is was a psychologist and is currently guiding uh, candidates to get through SSB and उनको train करते हैं. And we will ask him today various questions regarding psychology, screening and SSB in general जो aspirants के होते हैं. So stay tuned, video end तक देखिएगा. सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फोन नंबर सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इफ यू वांट टू गेट थ्रू हिम for guidance. Sir, thank you so much. Thank you, Simrat. It's a pleasure for me to be part of the Fauji show, and it's a big channel. You don't call it a small channel. It is indeed a big channel, and it's a very popular one especially amongst the youngsters. I was lucky, sir, and I'm lucky to help people, and I'm lucky कि veterans like you come on the channel and grace us by your presence. So because जो असली ज्ञान है, candidates अपना perspective दे सकते हैं कि how they have got through, but what happens behind the scenes is and can only be told by veterans who have served in the system. So thank you so much, sir. Thank you. It's an सर, honor. एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग के बारे में कि व्हाट हैपेंस इन स्क्रीनिंग एंड व्हाट डू दी थ्री असेसर्स दे सी इन अ पर्टिकुलर कैंडिडेट एंड आल्सो इफ इट मैटर्स कि रिटन एंट्री है या नॉन रिटन एंट्री है बिकॉज द अमाउंट ऑफ पीपल कमिंग इन टू द एसएसबी आल्सो इंक्रीजेस व्हाट आई हैव नोटिस्ड. सो सर, कैन यू प्लीज शेयर अस योर एक्सपीरियंस? Well, in screening, as we are, most of us are aware that there are two tests that will be held. One is the OIR test, that's Officer Intelligence Rating, and the second one is PPDT, that stands for Picture Perception and Discussion Test. So ये दो टेस्ट होते हैं मेनली. OIR टेस्ट पे इतना ज्यादा वेटेज मैं नहीं देता हूँ बिकॉज दैट जनरली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर एबल टू get a good OIR. And the main reason why candidates get rejected is basically because of the PPDT. That is the picture perception and discussion test. So when the candidates have written the story and then they are divided into groups of around 12 to 15 candidates each. So that is the time when the interviewing officer, the GTO and the psychologist will be sitting and they'll be observing how they narrate the story and then how the discussion takes place amongst them. So what they actually see is basically three things, though other things are also there. But primarily, what is seen in the screening is how the narration is taken place, how confident the person is while narrating the story, and what was his body language, and also how was he able to relate to the stimulus that was shown to him. So many times it happens कि candidates जो है जो story मतलब लिख देते हैं जो picture से बिल्कुल ही विपरीत होती है. It has no bearing and relevance to this picture that has been shown. So that is one of the major reasons why many candidates get rejected.
तो एक तो वो होता है, दूसरा रीजन होता है कि या तो वो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है बिल्कुल भी डिस्कशन में, और दे ओवरली पार्टिसिपेट एंड डोंट लेट अदर्स स्पीक. So that also happens at times. Okay. Or at times a candidate becomes so dominating that he is not, letting others grow or letting others speak. तो वो बाकियों को पुल बैक करता है, एंड दैट इज अ रीजन कि वो तो आउटराइटली रिजेक्ट हो ही जाता है कैंडिडेट. So these are some of the reasons which I feel that why candidates get rejected and they are not able to, get screened in. Otherwise, screening is a very simple process. We don't get into too much technicalities at that time. Okay. Broadly, whether we analyze whether the candidate is uh, worth, being assessed or not. That is what we see. However, as it's a big thing. I mean, you just now mentioned that sometimes a lot of candidates come and it becomes difficult to handle. So yes, it does make it difficult for the assessors also to handle so many candidates. But the endeavor, I must say that, is that maximum people should get screened in. We should give maximum opportunity to the candidates because candidate इतना दूर से आता है बेचारा. तो endeavor यही रहता है कि मैक्सिमम लोगों को चांस दिया जाए. Okay. So, sir, और yeah. sir, does luck play a role in this? Because sometimes I've seen AIR one है candidate, and he has also got screened out. लाइक जैसे विराट कोहली भी हर दिन तो सेंचुरी नहीं मारेगा, लाइक कभी जीरो पे Absolutely. आउट हो जाएगा, कभी सेंचुरी मारेंगे. सो डज लक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस? यस, लक से ज्यादा मैं बोलूंगा, लक डेफिनेटली लक तो होता ही है, बट लक से ज्यादा मैं बोलूंगा कि उस दिन की परफॉर्मेंस कैसी थी उस कैंडिडेट की. लाइक एज यू सेड कि किसी दिन तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, कई कई दिन आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हो. सो आप उसकी असेसर की नजर में आ ही नहीं पाए बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस उस दिन थी ही नहीं. आप चुप बैठे रहे या फिर आप यू कुडंट पार्टिसिपेट वेल. सो उस दिन आपका वो, दैट वाज नॉट योर डे एक्चुअली. सो यस, थोड़ा बहुत तो लक भी होता ही है. मेनी टाइम्स recommended candidate also gets rejected and doesn't get screened in. So that does happen. ओके सर. सर कभी ये बायसनेस भी हो जाती है कि ये तो ऑलरेडी रिकमेंडेड है, व्हाट्स द यूज ऑफ टेकिंग हिम अगेन एंड प्रोसेसिंग हिम अगेन? या इट इज लाइक कि नहीं, वी विल सी द कैंडिडेट एज इट इज, फ्रेश देखते हैं उसको, दे डोंट जज. Yes, no, candidate is seen afresh only. Even a recommended candidate, once he comes for his second SSB also, he is seen as a fresh case. And again, as I just brought out that उस दिन आपकी परफॉर्मेंस किसी भी टेस्ट में कभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते हो, तो फ्रेश परफॉर्मेंस देखी जाती है. एंड बेस्ड ऑन दैट द असेसर टेक इट एज अ फ्रेश केस itself. They don't have no प्री कंसीव्ड ओपिनियन अबाउट दैट कैंडिडेट की इसको हमने एक्सेप्ट करना ही है, ऐसा नहीं होता. सर कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन द स्टोरी राइटिंग प्रोसेस? ये पीपीडीटी एंड टीएटी में जो स्टोरीज हैं बिफोर द कैंडिडेट, जब प्रिपरेशन स्टेज में है एंड व्हेन ही इज इन द स्टेज व्हेन ही हैज टू राइट द स्टोरीज, सो व्हाट शुड he या she should keep in mind? See, first, as I just brought out, that the story that the candidate is writing, it should be related to the stimulus that has been shown. पिक्चर कुछ दर्शाती है और कैंडिडेट कुछ और लिखता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट द कैंडिडेट शुड इंश्योर. सेकेंड इज टू ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी केयरफुली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैंडिडेट जल्दी में होते हैं कि मैं अपना लिख दूं बस स्टोरी कैसे भी करके और खत्म करूं टेस्ट को. So that should not be the approach. The approach should be that the candidate should analyze each and everything in minutest of the detail and then write the story. And at the same time, the thoughts, feelings, and action of the character that are shown, that should also be taken into consideration. Then what led to the situation, what is going on at present, and what the outcome will be. These are the instructions that are generally passed for writing the stories. So he should relate to these instructions very carefully and then present his best story that he can write. Sir, how can a candidate write a high quality story? Like stories average, but to stand out in the crowd. Uh, can you give us an example? कोई ऐसा candidate who has written some story which
like might have impressed you as well? ऐसे तो कई candidates say now it's been long drawn process, so I don't remember now. But yes, so far as writing good stories is concerned, you need to be a little more imaginative and think out of the box. Many candidates go to coaching institutes and they say कि हमारे को इस स्टोरी में क्या लिखना है, ऐसी पिक्चर में क्या लिखना है, तो वो एक प्री कंसीव नोशन के साथ आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. So I would recommend that it is good to take coaching. Nothing wrong in taking coaching, but that coaching should be taken as a step forward to know the procedure and at the same time to know how you can improve yourself rather than mugging up things and just vomiting it out at the when the test comes to you. So that is not something good. Okay. सर एक कोचिंग की आपने बात की अभी, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्टेज द कैंडिडेट शुड फोकस ऑन गोइंग टू अ कोचिंग एंड preparing, or he should focus on building his own personality, or both? So what Yeah, I should be would your say it is ideal both. strategy? It is both. Personality is something which is not made in a day or two, और या एक महीने में मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर लूंगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. इट इज अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस and it builds over a period of time. So especially when the child comes under the adolescent stage and he is motivated to join the forces, so that is a time a healthy work environment, a healthy environment to be should be given to the child. That's what I tell most of the parents also, कि एक अच्छा माहौल देना बहुत जरूरी है बच्चे को, कि दैट इज अ फॉर्मिडेबल एज व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स हिज पर्सनालिटी. सो दैट इज देयर एंड एट द सेम टाइम coaching is also required thoda bahut, because just to brush up as to how whether you are on the right track or not. And like any test or any interview, you need to practice yourself. So similarly for SSB also, you need to practice. If somebody says कि भाई बिना practice करे हो जाएगा, there are few people also like that who just don't practice and straight away go walk in the interview and they get selected, but there are hardly a few in numbers. So it is good to practice and be well prepared before you go for the interview. Right. Sir, OLQs क्या हैं, and can you ब्रश अप ऑन दैट टॉपिक कि OLQs को इनहांस कैसे कर सकता है एक कैंडिडेट व्हाइल द कैंडिडेट इज इन प्रिपरेशन? See, OLQs are nothing. Basically, they are those 15 personality traits that are looked by the defense forces as to how can a person grow if he has those 15 OLQs. So these are those officer-like qualities. We all know them. 15 OLQs are there. So it starts from EI to last में आपका stamina होता है. So if you go gradually one by one, so these are simple words of English. ओके. एंड आप उनको कैसे अपनी डेली लाइफ में लाते हो, और यू योरसेल्फ विल कम टू नो दैट इफ आई फॉलो दीज थिंग्स इन प्रिंसिपल. एंड फॉर एग्जांपल कोऑपरेशन है, तो अगर मुझे कोऑपरेट करना है किसी के साथ, तो कोऑपरेशन का पहले तो मतलब पता होना चाहिए. Then once you know the literal meaning of that word, then that is the time when you start cooperating with others, and cooperating without any motive. That is more important. अगर मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ. आई शुड बी एबल टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबल टास्क दैट आर गिवन बाय माय पेरेंट्स और टीचर्स और मे बी माय सुपीरियर ऑफिसर्स, जो भी है जहाँ जॉब कर रहा हूँ. एंड आई शुड नॉट बी कैजुअल इन माय एटीट्यूड. आई शुड बी मोर फोकस्ड. बाकी अपना जो फिजिकल बेयरिंग है, अपना जो वन हैज टू keep himself physically fit. If you are planning to join the defense forces, so you need to be physically fit. So that also builds up your stamina, your physical stamina. Then how lively you are as a person. How much initiative are you taking in your various tasks on a day to day basis. अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कितना क्लास में इनिशिएटिव लेते हो, कितना आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, whether you are able to come out and give out your logical ideas in the class. Also, you are able to ask the teachers questions, clear your doubts, and participate in extracurricular activities like debate competition, or maybe certain extempores or other kind of such competitions, whether you are participating in sports or not. So
All these things gradually build the personality of a child, and nowadays lot of institutes have opened up also, wherein they take the foundation course of the students, and they work on the development of the personality. सर आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर साइक क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की? लेट्स से दिस वीडियो विल रिलीज नेक्स्ट वीक इन फेब, एंड बाय अप्रैल में रिटर्न होगा, एंड देन कैंडिडेट्स विल हैव अराउंड 3 4 months. So in during that time, how should one go about preparation for his psych part at least? uh, अगर आप एकदम जीरो से थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में थोड़ा समझा सकते हैं कैंडिडेट्स को तो बढ़िया रहेगा सर. अ, देखो, अगर आपका अप्रैल में अगर टेस्ट है, एसएसबी है, तो यू हैव गॉट अराउंड 1 महीना बचा हुआ है आपके पास। तो 1 सवा महीना हम मान के चलते हैं कि आपने अपना एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करी है और आप बहुत मोटिवेटेड है फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए। सो नाउ यू रिक्वायर ओनली दैट ब्रशिंग अप, दैट इज व्हाट आई फील। तो उस समय पे आप, दे कैन फर्स्टली enroll टू somebody who can guide them about the procedure। ओके. एक तो प्रोसीजर पता लग जाएगा उसको। दूसरा, प्रोसीजर के अलावा उसको क्या टेस्ट आते हैं, उसके अंदर उनकी डिटेल्स पता लग जाएंगी। अब टेस्ट में कैसे रिस्पॉन्सेज देने हैं, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करेगा, एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन्ड असेसर हु हैज हैड अ टेन्योर एट द एसएसबी। तो वो उसके कैंडिडेट की क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, वो बता पाएगा। So he can tell also a few do's and don'ts कि this is not correct as to, this doesn't showcase and this suit your personality for that matter। प्लस 1 महीने के अंदर वो अपने आप को काफी ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट भी कर पाएगा। दैट पर्सन विल बी एबल टू कम टू नो कि भाई मेरे में क्या कमियां हैं, सो दैट आई कैन प्रोजेक्ट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू। सो इट विल बी अ एडिक्वेट टाइम फॉर द कैंडिडेट अगर वो वर्क अप ऑन करना चाहे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है, दे डोंट प्रैक्टिस ऑन WATs, वर्ड के सेंटेंसेस जो है एसोसिएट करने जो होते हैं, वो ठीक से करते नहीं है प्रैक्टिस। दे राइट वेरी जनरल, एक 6 स्टैंडर्ड के बच्चे के जैसे वो आंसर्स लिख देते हैं, उनके मतलब सोल्यूशन दे देते हैं, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। अगर कोई खास करके अगर कोई मे बी IMA एंट्री के लिए, कोई डायरेक्ट एंट्री के लिए एनरोल कर रहा है, तो ही दैट पर्सन इज ऑलरेडी attained a certain maturity level, that so the responses which that person writes, it should commensurate to his age। तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की तो जरूरत है, बिकॉज सी इट्स अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर फॉर दैट पर्सन, राइट। तो जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा और उस हैबिट में नहीं आएगा लिखने की तेज, तो तब तक कैसे काम चलेगा। प्लस वो कितना डिटर्मिन्ड है, तो उस पर भी डिपेंड करता है हाउ मच ही इज विलिंग टू वर्क हार्ड अपॉन हिमसेल्फ। सर थोड़ा सा स्टूपिड क्वेश्चन है बट मैं क्यूरियस हूँ. सर जैसे OLQ में OLQ है स्टेमिना आपने बताया, तो फिजिकल स्ट्रेंथ का, एंड साइकोलॉजिस्ट कैसे इसको असेस करते हैं? बिकॉज ऑल दे हैव इज अ डोजियर. See, there are not all OLQs that the psychologist will be assessing. Certain OLQs are there, especially when it comes to the physical courage or the physical stamina. They are best, you know, judged or assessed by the GTO. जी जी, ओके, गॉट इट. So, but mental stamina, अगर जहाँ तक की बात करी जाए, तो okay, how the candidate writes and how well the candidate appears in the psych test, so उस पे भी डिपेंड करता है। सर एक और क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, एनी मेमोरेबल कैंडिडेट जो आपको याद हो इन ड्यूरिंग व्हाइल यू वर सर्विंग एट भोपाल बोर्ड, जिसको आप कॉन्फ्रेंस में मिले या कहीं और? हाँ, एक मेमोरेबल कैंडिडेट था मेरे पास। दैट बॉय वाज अ सर्विस कैंडिडेट ओके. एंड ही हैड कम फॉर ACC एंट्री। सो मुझे एक बहुत अच्छा लगा उस बच्चे के बारे में, बिकॉज ही वाज वेरी ट्रू, ऑनेस्ट तो था ही, एंड वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रेजिमेंट। ओके. जब वो कॉन्फ्रेंस में जब आया था, तो उस समय तीनों SSS ने क्लियर कर रखा था। ही वाज क्लियर्ड बाय ऑल 3, एंड उससे क्वेश्चन, वैसे ही जनरल क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ वाज योर स्टे एंड हाउ वाज द फूड इन द SSB। तो उसने बोला अच्छा था, इट वाज वेरी नाइस सर, आई रियली एंजॉयड माय स्टे। तो फिर नेक्स्ट पूछा कि विच फूड इज बेटर, वेदर द फूड एट योर रेजिमेंट
इज बेटर जहां पर आप सर्व करते हो, या एसएसबी का खाना इज बेटर? तो उसने जितने धड़ल्ले से बोला और बोला कि भाई सर, खाना तो मेरी यूनिट का ही अच्छा है। एंड द एलान एंड द फर्मनेस विद विच ही स्पोक, तो वो बात दिल को छू गई और मुझे आज भी याद है। सो एंड देन वी फेल्ट कि भाई कितना वो यूनिट ने उसको स्पेयर किया होगा, जाहिर सी बात है, अपने ड्यूटीज से, और कई चीजों से उसको माफी दिलाई होगी, कई कामों से, और उसको एक्सक्यूज करके पढ़ने का मौका दिया होगा। तो उसने उसका पूरा वो श्रेय दिया यूनिट को, तो वन फेल्ट वेरी हैप्पी, ही विल बिकम अ गुड ऑफिसर वन डे। सर, ऑन दिस टॉपिक ऑफ एसीसी एंड एससीओ एंट्री के जो कैंडिडेट्स हैं, सर्विंग पर्सन्स, I sometimes when I interact with them, though I feel कि they are good, but they are not able to express their thoughts in language, the English language. तो how does SSB cater for that? Language तो आप एकेडमी में भी काफी हद तक आपकी इम्प्रूव होती है, लेकिन एसएसबी में आप हाउ डज वन पोर्ट्रे इट्स ट्रू सेल्फ एंड बेस्ट साइड जब तक उनके पास वो वर्ड्स ही नहीं है टू एक्सप्रेस? लाइक मदर टंग में होता तो बेटर रहता उनके लिए, बट लाइक आपके क्या व्यूज है सर इसके ऊपर? Well, in SSB, the language to be used is English. So, and even when the GTO briefs, so GTO clearly says the language to be used is English. However, in case you get stuck, you can use Hindi, but revert to English as early as possible. सो दिस इज, ये एक सिस्टम का एक प्रोसीजर है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज हाउ इट इज. So an officer is expected to communicate in English, because tomorrow it will happen that the officer will have to not just command his men, but वो बाहर भी जाएगा और वो फॉरेन नेशंस में भी जाएगा. तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज विच यू आर एक्सपेक्टेड टू नो. सो आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशंस आप तभी दे पाओगे अपना, जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा ज्ञान होना. मैं नहीं कहता कि बहुत फ्लुएंट हो, बट जिसको बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में कि इंग्लिश तो आनी चाहिए कम से कम बोलनी. ओके, मैं तो बेसिक आप इनफ मिक्स टू एंड मैच कर, पोर्ट्रे, जो बोलना चाहता है वो बोलने के लिए इतना बेसिक आना चाहिए बेसिक बेसिक। आना चाहिए एटलीस्ट, है ना. इट शुड नॉट हैपन कि मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ, या बिकॉज मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाएगा. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो जो भी बोल रहे हैं बिंदास होके, कॉन्फिडेंटली होके बोले, और कम्युनिकेट जितना हो सकता है इंग्लिश में करें, बट उससे आपका लाइवलीनेस और आपके स्टेमिना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सर, आपको फौज ज्वाइन करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला सर? मेरे को फौज, आई बिलोंग टू देहरादून. And अच्छा। when I was in school, so I used to see, and college ki, I used to admire the gentleman cadets in their mufti dress when they used to come out for liberty. तो मैं बड़ा impress होता था उनका हेयर स्टाइल देख के और उनका यूनिफॉर्म देख के. सो मुझे भी लगता था ऐसे ही बनूंगा मैं भी. So that was one reason I wanted to join the forces and wear the uniform. ग्रेट। एंड सर, आपका कोई एकेडमी टाइम का कोई एनेक्डोट विच यू वुड बी कंफर्टेबल टू शेयर? एनेक्डोट तो ऐसे बहुत सारे हैं. आई वॉज अ सिंसियर सोल इन द सेंस दैट मेरी पनिशमेंट सबसे ज्यादा कम थी. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और ओके। नॉट. एकेडमी में पनिशमेंट्स दी जाती हैं, तो मेरी जितनी भी पनिशमेंट थी सबसे कम थी. आई पास्ड आउट विद हार्डली 3 एक्स्ट्रा ड्रिल ड्यूटीज. एंड सर, एंड नो रिस्ट्रिक्शन, नो ईटी, देयर वाज नो नो रिस्ट्रिक्शन. आई रूट मार्च, entire नथिंग? my IMA tenure I was a वाओ। sincere boy, so I came out. तो मेरे ज्यादा ऐसे थे नहीं, बट मेरे कई फ्रेंड्स थे बेचारे जो फंसते गए, एंड एक के बाद एक उनकी वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी बढ़ती गई. बिल्कुल सर। तो दैट हैपेंड विद सम ऑफ देम, बट लिबर्टी में हाँ, हमारे को एक बार बोला गया था कि दैट यू हैव टू, यू कैन गो आउट ऑन फ्रेंच लीव, बट डोंट गेट कॉट. सो बीइंग अ लोकलाइट, आई थॉट मेनी टाइम्स कि भाई अब मैं करके निकलता हूँ बाहर, बट वो कभी हिम्मत हुई नहीं मेरी. ग्रेट तो सर, अभी प्रेजेंटली यूर इन देहरादून? yes, I've settled in Dehradun after retirement. कहाँ पे सर? I belong to Rajpur Road. ओह ग्रेट, तो मसूरी की तरफ जो रोड निकलती है सर, वो हाँ हाँ, वाला रोड exactly. है The ना? straight road that goes to Mussoorie, ग्रेट। and there only. बिफोर ज्वाइनिंग एनडीए सर, आई वेंट टू यूपीएस देहरादून बिदोली में। सो हम काफी घूमे हैं वहाँ पे देहरादून में, घंटा Okay. घर और पैसिफिक मॉल और जब पूरा प्रेम नगर जैसा हर जगह जाते थे, बहुत अच्छी जगह है सर। Great. ग्रेट।
सर, तो लिबर्टी वुड बी ग्रेट सर। हर लिबर्टी पे आप घर का खाना मिल जाता होगा, इन कोस्टमेट्स को भी यस साथ यस, में। वन यूज टू लुक फॉरवर्ड फॉर लिबर्टीज। तो हर लिबर्टी संडे को निकल के आते थे बाहर। तो अच्छा, उसमें फिर एक मोटिवेशन और होता था कि अपना फटाफट से ड्रिल टेस्ट और पीटी टेस्ट पास किए जाए, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट क्लियर योर टेस्ट इन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट तो वो आपको वो लिबर्टी नहीं मिलेगी। सो दैट वाज अनदर बिग मोटिवेशन फॉर अस टू क्लियर द टेस्ट वेल इन टाइम। ग्रेट। फ्रेंड्स के साथ बहुत आते थे, वी यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम कमिंग होम एंड हैविंग घर का खाना तो। सर, यू हैव सर्व फॉर सो मेनी इयर्स इन द फोर्सेस। कोई ऐसी चीज जो आप एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं कि यू शुड इनकलकेट दिस इन योर बिहेवियर या पर्सनालिटी इफ यू वांट टू बी अ गुड ऑफिसर, गुड सोल्जर, तो वैसा कुछ सर? See, there are many things. The officer is a multifaceted person जो की है, so उसको हर चीज में फिट होना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, चाहे वो मेंटल रोबस्टनेस है हो। तो एवरीथिंग ही हैज टू, बिकॉज ही इज लीडिंग द मैन आफ्टर ऑल। सो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, स्पेशली इफ यू वांट टू डू वेल इन द सर्विस लाइफ, यू नीड टू बी गुड अवेड रीडर। तो रीडिंग आपकी एक हैबिट बन जानी चाहिए, सो दैट वंस यू कम टू क्लियर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके आते हैं, सो यू क्लियर दोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेल इन टाइम, so that your promotion and other things are also taken care of. So reading is one thing, plus physical fitness is another thing. बाकी that person is an officer, तो integrity has to be at the topmost level. Sir, any books which you would like to recommend to fellow aspirants? Many books are there you can go through. I would say, especially military history books are the ones which are going to sail you through in various exams, the competitive exam that you're going to face through. So I would recommend that there are many military history books available in the market as well. So one should start reading them and going through them. Great. सर, थोड़ा एसएसबी पे वापस आते हैं रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंस पार्ट। व्हाट हैपेंस इन अ कॉन्फ्रेंस? उससे पहले जो वेट होता है एंड जब कैंडिडेट आता है, एंड समटाइम्स ही इज आस्क्ड बेसिक क्वेश्चंस जैसे खाना एंड स्टे। समटाइम्स ही इज आस्क्ड लिटिल सिचुएशन टाइप क्वेश्चन कि ये सिचुएशन हुआ तो कैसे रिएक्ट करोगे, या बोतल के क्या यूज हैं। मतलब आई व्हाट आई सीन एंड व्हाट आई हर्ड। सो क्या होता क्या है सर कॉन्फ्रेंस के अंदर एग्जैक्टली? Conference is firstly, the conference is the day when all the SSS together sit, and that is the time when the final marks are read out. Because before that, neither the GTO knows what the psychologist has given, and nor the IO knows each other. So that is the time when we discuss the marks of the candidate. So it is just the reading of the marks, that is one. And if something peculiar that is found in any candidate, that is generally brought out in the conference procedure. That is only for the knowledge of the other assessors, basically to help them understand the technique even better. That is one. So in the conference, if a candidate is cleared by all three, then there is no major discussion that takes place. It is just the marks are read, the candidate comes, and the candidate is asked routine questions that you just now mentioned, and the candidate goes back. If the candidate is not cleared by any of the assessor, then also there is no major discussion. Routine questions are asked. However, if the candidate is cleared by one or two assessors and he is making the requisite number of marks, so he is a borderline case, you can say in layman language. तो उस केस में कैंडिडेट की जो क्वालिटीज है उस पर डिस्कशन होता है कि कैसे कहाँ पर दैट पर्सन इज लैकिंग, एंड अकॉर्डिंगली ऑन दोज OLQs द कैंडिडेट इज प्रोब्ड फर्दर. ओके सर, ऐसा भी हो सकता है कि लाइक जीटीओ एंड इंटरव्यू ऑफिसर हैज क्लियर्ड द कैंडिडेट, बट देयर इज सम रेड फ्लैग व्हिच इज देयर, व्हिच इज सीन बाय द साइकोलॉजिस्ट, और वाइस वर्सा किसी और एसेसर ने देखा है। सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस? In that case, the discussion takes place. Again, they decide as to whether the candidate is worth clearing or not, or whether the person who has not cleared the candidate, the assessor who has not cleared the candidate, whether that assessor wants to come up for that candidate or does not want to, or maybe wants to put a veto
कि no, I will not clear the candidate. That is asked to that assessor, and that decision takes place at the conference. Okay. सर आप आपने कभी ये होते हुए देखा है लाइक इन अ कॉन्फ्रेंस एंड इफ यू कैन शेयर कि व्हाट हैड हैपेंड व्हाट हैज द कैंडिडेट रिटन जो ऐसा लगा कि दिस इज अ रेड फ्लैग यू नो but like with example if you can show, yeah, if it's confidential and then also it's fine, I we won't ask for that. No, it's not about be having confidential, because see, the dossier is a sum total of the personality that we gauge. So not we don't reject a particular candidate on one particular response, Yeah. or on one particular SRT या फिर one particular उस पे हम नहीं gauge करते. It is a sum total of what all he has written that should get corroborated in all the three tests, four tests rather. तो उसके बाद वी कम टू अ कंक्लूजन कि इसको कहाँ लेना है, बिकॉज चारों टेस्ट का इमेल्गमेशन करने के बाद देन वी कम टू दिस कंक्लूजन. सो इट्स अ साइंटिफिक प्रोसीजर. तो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के बेसिस पे किसी को रिजेक्ट करना वुड नॉट बी करेक्ट. ओके. एंड सर जो पीआई क्यू फॉर्म होता है वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी अवेलेबल होता है, आई एम गेसिंग, राइट? सो आप लोग यू गो थ्रू दैट या ओनली द डोजियर? No, the PIQ form is with the interviewing officer as well as for the psychologist. So we first think that before reading the dossier, we go through the PIQ form of the candidate. ओके. पहले उसको एनालाइज करते हैं and then we switch over to the dossier when we do the assessment. ओके. सर कैन यू शेयर क्या देखते हैं आप उसमें एज अ साइकोलॉजिस्ट? See, a lot of things are seen. You generally come to know about the person. It's basically a biodata of the candidate. You come to know about the uh, background that that candidate comes from. उसकी education level कितनी है? Then उसका how much has he scored? What was his achievement in case he has academically if he has achieved something? Present is what is his present occupation? Student है या फिर वो है? प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह में कितना पार्टिसिपेट किया है. तो ऑल दोस थिंग्स आर गेज्ड इन द सेंस दैट यू कम टू नो अ ब्रीफ अबाउट द कैंडिडेट की व्हाट ऑल ही हैज डन. So when the responses, when the candidate writes in the stories or in the this thing, so you can have a better correlation as to what would have been the reason why the candidate has written, if something he has written also. Okay. And sir, is the blank story or the self description shared with the interviewing officer as well, या ये सिर्फ myth है एक? No, that's a myth. No, the dossier is not shown to anybody. Okay. It And remains only सर with the psychologist. ऐसा भी हो सकता है कि like candidate has written something and the psychologist wants to confirm it, so he calls the candidate and he meets him in person, या सिर्फ dossier ही देखते हैं psychologist? No, that there's something called as a conduct of inquiry, wherein Okay. the candidate is called, especially that happens when the candidate has not given the requisite number of responses. Maybe he could have left a story or something like that, or maybe dossier is incomplete. So that is the time to clear out as to what would be the reason why the candidate has not, given the responses. So just to cross check and verify the conduct of inquiry takes place, and the psychologist calls for a one-to-one interview. Okay. Great. Sir, on that note, thank you so much for coming on our channel. Sir, आप अगर candidates को बता सकते हैं कि how can they reach out to you and what are you doing currently for the candidates, so it would be great, sir. Okay. Currently, I have after retirement, I am working with one of the institutes by the name of Doon Defence Dreamers, and that is in Dehradun. And if the student wants to reach out personally to me, then they can contact me through Instagram also, or they can contact me on my WhatsApp number, that is 7006 265 261. Available So in description to check it out. Yes, sir. yes, so either ways they can approach me the way they want. Evenings generally I take my evening online classes, and during the daytime I work with the academy. Okay, great. थैंक यू सो मच सर. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, सो मच टू लर्न एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिस्पॉन्स जो कैंडिडेट्स का आएगा ऑन दिस वीडियो. गाइज प्लीज फॉलो सर ऑन इंस्टाग्राम. ही इज मेकिंग ग्रेट कंटेंट and it would definitely help you all.
ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज मच एज यू कैन अपने दोस्तों के साथ. एंड सर, जाने से पहले एक क्वेश्चन जो हम हर गेस्ट से पूछते हैं कि व्हाट्स योर मैसेज टू द एस्पिरेंट आउट देयर हु इज लाइक इन द प्रोसेस, ही इज पुटिंग इन एंड कहीं कहीं स्क्रीन आउट हो रहे हैं या कहीं कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं. सो व्हाट्स योर मैसेज टू द कैंडिडेट आउट देयर? The only thing that I would want to convey to the candidates is that, first of all, don't lose faith in your own abilities. Rejection is just a stepping stone to, finally get recommended. So don't vary from your goal. Keep pursuing, keep working hard. One day you will definitely achieve success. And ultimately, army is also not end of all. Even if you don't get through, there'll be so many other better avenues for you. But now, if you have chosen army as a passion, so just visualize yourself कि एक दिन मैं वो uniform don करूंगा, and keep working towards the goal. Just don't let it go. Keep working it, and अगर आप सही ढंग से सही डायरेक्शन में स्मार्टली वर्क करोगे तो सक्सेस पक्का मिलेगी. Great. On that note, thank you so much. Jai Hind and take care. Thank you, Simrat. It was lovely interacting with you. Take care. Thank you, sir. Bye.